येरादारी मंत्री श्री मॉविन गुदिनो, पर्यटन आणि IT मंत्री श्री रोहन खवटे, विधिमंडळ कामकाज, भौशिक बांधकाम, पर्यावरण आणि कायदा मंत्री निलेश काब्राल, राज्यसभा खासदार श्री विनय तेंडुलकर, वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा साळकार, मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर, मुरगाव पत्तन प्राधिकरण आणि नवमंगळुरू पत्तन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉक्टर व्यंकटरमण अक्कराजू, मुरगाव पत्तन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष श्री GP राय हांका आम्ही येवकार दितात। तसेच कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार। आमचे सोयरे तसेच हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक सांगीतिक येवकार दिता मंथन सांस्कृतिक पंगड।
स्वागतम सुस्वागतम. येवकार आमच्या गोंयांत. हे आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय. हांगा दर्याची ल्हारां धरच्यांनी खेळटात जाल्यार दोंगुल्ल्यो आनी झाडां पेडां वाऱ्यार धोलतात. आयकुया ह्या म्हान भुंयेची व्हडविकाय.
मचे, यह है हमारा गोवा। गोवा के समंदर के गहराइयों से अब चलते हैं असम की वादियों में। मातृभूमि का गुणगान, प्रकृति का सौंदर्य असामी भाषा में। आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आपके लिए खास प्रस्तुति। धन्यवाद। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल्स के विकास के लिए और बायणा में रेलवे यार्ड में अप रैंप के निर्माण के लिए शिलान्यास आज हो रहा है। साथ ही नवमंगलूर पत्तन प्राधिकरण के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। तो इस शुभ कार्य का और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। सम्माननीय अतिथिगण से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ करें। दीपो हरतुमे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति यह सुनिश्चित करती है
कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। आज दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ यह निर्माण और विकास का कार्य तथा लोकार्पण होने जा रहा कार्य ऊंचाई प्राप्त करेगा, यह विश्वास लेके हम आगे बढ़ते हैं। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के उपसंरक्षक एवं पत्तन सुरक्षा अधिकारी कप्तान मनोज जोशी प्रस्तुत कर रहे हैं वैष्णव भजन। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वन या माइक टेस्टिंग चेक। या माइक टेस्टिंग चेक। हरे कृष्णा। प्यार, तप और त्याग की धरती गोवा, श्री भगवान परशुराम की धरती गोवा से आप सबके लिए हम लेके आए हैं एक वैष्णव भजन। हरे कृष्णा। भजहु रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणार बिंद रे। भजहु रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणार बिंद रे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। भजहु रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जनम सत्संगे। दुर्लभ मानव जनम सत्संगे। दुर्लभ मानव जनम सत्संगे। दुर्लभ मानव जनम सत्संगे। करहै भव सिंधु रे। करहै भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। शीत आतप बात वरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। शीतय तप बात बरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जना। विफल से बिनु कृपण दुर्जना। विफल से बिनु कृपण दुर्जना।
फल सुख लाभ लागी रे चपल सुख लाभ लागी रे जाहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे हे धन यौवन पुत्र परिजन इति के आछे परती रे हे धन यौवन पुत्र परिजन ईते की आछे परती रे कमल दल जल जीवन टलमल 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 भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार वृंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना श्रवण कीर्तन शरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना श्रवण कीर्तन शरण वंदन पाद सेवन दास रे पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदना पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास भिलास रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे धन्यवाद. धन्यवाद कॅप्टन मनोज जोशीजी. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे तसेच मानादीक सोयऱ्यांक शाल आणि फुलांचो तुरो भेटून आम्ही येवकार देतात. मुरगांव पत्तन प्राधिकरण तथा नवमंगलूर पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटरमण अक्कराजू जी से निवेदन है कि कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सम्माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का शाल और पुष्प प्रदान करके सम्मान पूर्वक स्वागत करें.
मानादीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां शाल आनी फुलां तोरां भेटोवन येवकार दिवची अशी विनंती करता. परिवहन आणि जलमार्ग तसेच पर्यटन राज्यमंत्री मानादीक श्री श्रीपाद नाईक हांकां शाल आणि फुलां तुरो भेटोवन येवकार दितात. गोंय राज्याचे पंचायत आणि येरादारी मंत्री श्री मोविन गुदिनो हांकां आमी येवकार दितात. गोयचे पर्यटन आणि IT मंत्री श्री रोहन खंवटे हांकां येवकार दितात. विधिमंडळ कामकाज भौशीक बांधकाम पर्यावरण आणि कायदो मंत्री श्री निलेश काब्राल हांकां येवकार दिवया. राज्यसभा खासदार श्री विनय तेंडुलकर हांकां आमी येवकार दितात. वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा साळकर हांकां येवकार दितात. मुरगावचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हांकां आमी येवकार दितात. सगळ्यांक परतून एक भाव माये मोगाचो येवकार. मुरगांव पत्तन प्राधिकरण और नवमंगलुरु पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटरमण अक्कराजू जी से निवेदन है कि वे सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी का स्वागत करें. Honorable Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and also Ayush, Government of India, Shri Sarvananda Sonowal Saheb, Chief Minister of Goa State, Dr. Pramod Sawant Saheb, Shri Shripad Naik Saheb, Union Minister for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, Shri Vinay Tendulkar, MP Rajya Sabha, Shri Movin Transport Industries, Minister for Goa, Shri Nilesh, Minister for Environment, Goa State, Shri Rohan, Minister for Tourism and IT, State of Goa, and Shri Krishna Salkar Saheb, MLA Vasco, and Shri Sankalp Amonkar, MLA Marmagoa constituency, my colleagues from Goa Port and Mangalore Port, and more particularly the wise, dedicated, intelligent, individual citizens of Goa. A very good afternoon and warm welcome. As you all know, our country has a great dream of reaching $5 trillion economy by 2025 and $30 trillion economy by the year 2047. And our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi Saheb,
With this in mind, on 13th of October 2021 has started Gati Shakti, which means the strength of the speed. Under this, India wants to attract foreign investments and it wants to become the manufacturing hub of the world. There is a plan for $1.24 trillion investment in India, particularly the industries from technology, electronics, automobile and textiles. We want to base here so that we can serve as the manufacturing hub for the total world. As a part of this, and if you want to make this dream realize, there is a need to unlock the tremendous potential in the blue waters. As you all know, India has 12 major ports, 200 non-major ports, with 7,516 kilometers of long coastline. In fact, if you see the progress made by the present government in the last 8 years, there is tremendous progress. The capacity of major ports put together was 800 million metric tons 8 years back. Now it is 1,597 million metric tons. And by the year 2025, we want to reach further heights. Major non-major ports capacity put together, we want to reach 3,500 million metric tons. As far as non-major ports are concerned, we have marched from 300 to 1,000 plus million metric ton capacity. Cargo handled in the last 8 years from 555 million metric tons, we have reached 720 million metric tons. And from 417 million metric tons to 593 million metric tons, the non-major ports have reached. So there is tremendous growth in the past 8 years. Now, as a part of making our mission to happen, all the major ports are moving from major ports to smart ports to mega ports. As a part of this process, our Barbagova Port Authority, which has a history of 133 years and which had been serving the people for last decade, last century, has come up with 3 great projects. The main is International Cruise Terminal. The International Cruise Terminal is being constructed at a cost of 103 crores. As you all know, in this year, 16 domestic and 32 foreign vessels are expected to visit Goa. And cruise industry is a major boom for a tourist place like Goa. As everyone can appreciate, tourism industry is the industry which gives revenue jobs to the local youth with minimum investment. When one cruise vessel, whether it domestic or foreign, particularly foreign vessels, when they visit a city like Goa, it carries 3,500 to 4,000 passengers. And imagine even if 1,500 passengers get down in the city, even if they spend, as per the statistical data, 100 to 150 US dollars per head, per port, per visit. 150 multiplied by 100 rupees multiplied by 3,500 multiplied by 24. That's a huge amount of foreign currency that will flow into the city of Goa. So keeping this in mind, the Government of India and Ministry of Port, Shipping and Waterways, we are going to construct an international cruise terminal which is at par with the global standards so that the city of Goa can be made the home port. As you all know, Goa Seaport and Goa Airport are very close to each other, 15 minutes, not even 15 minutes. And your beautiful beaches are there. Now, once this cruise terminal completes, we expect cruise vessels to queue, not just 32. I expect more than 100. And imagine when these passengers get into, foreigners get into city of Goa, it is the artisans, it is the village industry, it is the street side vendors that get the benefit, taxiwala, buswala, these people are the people who get the benefit. And we expect employment, indirect employment generation of 3,000, not less than 3,000 after the completion of the cruise terminal. And I am very happy that always whenever a cruise vessel comes, the wise people of Goa always, they invite them
with open hearts, with open hands, and the saying that always a guest is the God is I really felt in Goa, and I am very sure we'll continue with that. And the other two projects, the Vasco Ram project and RoPax project, they are also meant to boost the tourism in Goa. I am sure you will appreciate, and our honorable minister will tell around 420 crores is allocated by the government of India under Vasco infrastructure, in which the fishing harbors are expected, the other RoPax berths are expected, and the fishing harbor which the honorable minister is envisaging is a fishing harbor of the global standards, where there will be auction places, there will be places for repair of the nets, there will be places for repair of trawlers, there will be cold storage. People of Goa will get the real benefit once the Vasco infrastructure turns into a reality. I am very sure this will happen. There is a saying, Paropakaram phalanti vukshaha, Paropakaram vahanti nadyaha, Paropakaram duhanti gavaha. I say, Goyopakaram vidam, Goya bandaraha. The means, just like fruits, the tree gives fruits, the river gives water to take care of your thirst, the cow gives milk, not for itself, for filling the hunger of the others. I humbly submit to you that Goa Port is here to serve the people of Goa, to create more opportunities, job opportunities in Goa, to increase the economy of the Goa. I am very sure always we will get the cooperation from the people of Goa. Now coming to Mangalore. In Mangalore Port, we are having around 16 berths for SPM. Mangalore Port is marching towards, growth. 39.2 is the operating ratio. And Bangalore Port, power is fully solarized power. And Bangalore Port is the only port which is having an operating ratio, and financially it is so sound. We are proud we can compare it with Mundra Port. We can compare it with Krishnapatnam Port, sir. We are not less than that financially. And also efficiently. The efficiency at Bangalore Port, the financial capability at Bangalore Port is not less than any private port. We do almost better than them. I am telling this with proud. And today, Honorable Minister is going to inaugurate the Malya Gate at Mangalore Port. This particular gate is the most modern and automated gate, which will be a role model for other ports. And also we are going to start waste to wealth, the waste we collect from each house, and we are developing compost and fertilizer from that. This is also going to be inaugurated by our Honorable Minister. There is a saying in Sanskrit, Udyamam sahasam dhairyam buddhi sekti paravakramaha shajate vardanti tatra daiva sahayakrut. Buddhi, Sahasam, Dhairyam, Shakti, Parakramam, all these Shadyagun, I am proud and happy to say that Honorable Union Minister Sonawal sir is having, and under his leadership, the major ports of the country and also the non-major ports of the country are marching towards the progress, and you will see very soon the major ports getting transformed into mega ports of the country. And the dream of the Honorable Prime Minister of India of reaching $30 trillion economy by 2047 and making India as a manufacturing hub of the world is going to happen. With this positive note, I once again want to submit my thanks and respects to the Honorable Chief Minister of Goa and the Ministers of Goa and MP and MLA of Goa and Honorable Shripad Nayak sir for his guidance, and particularly the people of Goa. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद सर. दोन महत्वाच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आता जाता. आंतरराष्ट्रीय आणि देशी क्रूज टर्मिनलाची उदरगत आणि मुरगांव बंदराचेर बायणा रेल्वे यार्डाची सुविधा वाढवपाच्या कामाची सुरुवात. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से विनती करती हूँ कि मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी प्रकल्प का भूमि पूजन करें.
गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच बंदर बोट परिवहन आणि उदका मार्ग तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नाईक हांकां तशें माचयेवेल्या सगळ्या मानेस्तांक विनंती करता की तांणी भूमिपूजनात वांटेकार जावचे. मुरगांव पत्तन प्राधिकरणाच्या 2 महत्वाकांक्षी प्रकल्पा खातीर आयज भूमिपूजन जाला. आंतरराष्ट्रीय आनी देशी क्रूज टर्मिनलाची उदरगत आनी मुरगांव बंदराचेर बायणा रेल्वे यार्डाची सुविधा वाडोवपाच्या कामाची सुरवात केंद्रीय मंत्री मानाधिक श्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जाल्या. या प्रकल्पाविशीं जाणून घेवया. एवी प्लीज. गोवा द पर्ल ऑफ ईस्ट, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और समुद्री संपर्क तथा अपने भव्य समुद्री तटों के कारण बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षक पर्यटन स्थल है, जो भारत का समृद्ध जगमगाता मुकुट के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है. ऐसा आकर्षण है इस प्रदेश में कि दूर दूर से पर्यटक खींचे चले आते हैं. इसकी वादियां, समुद्री तट अटकेलियां करती समुद्री लहरें, हरे भरे पेड़, चांदी से बिखरी रेत और इस पर सोना बिखेरती सूर्य की रश्मियां गोवा को विश्व पर्यटन मानचित्र के पटल पर अपनी एक अलग पहचान देती है. गोवा के विकास क्षेत्र में पर्यटन उद्योग एक प्रमुख हिस्सा है और इसी कारण भारत सरकार गोवा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में मुरगांव पत्तन द्वारा व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु निर्मित एक प्रतिबद्ध क्रूज टर्मिनल की संकल्पना से निश्चित तौर पर राज्य में क्रूज पर्यटन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा. मुरगांव पत्तन ने अंतर्राष्ट्रीय और देशी क्रूज टर्मिनल, रोपैक्स, फेरी और अन्य संबद्ध सुविधाओं की विकास की परियोजना कार्यान्वित की. अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग में 9,900 वर्ग मीटर क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय और देशी क्रूज टर्मिनल होगा. इस नई सुविधा में एक बार में कम से कम 3 क्रूज जहाजों की बर्थिंग को पूरा करने का प्रावधान होगा. इससे देशी क्रूज जहाजों में वृद्धि के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाजों की संख्या वर्तमान 38 से 40 से सालाना 136 जहाजों तक बढ़ने की उम्मीद है. 130 कारों और 10 बसों को समायोजित करने के लिए 5,500 वर्ग मीटर पार्किंग क्षेत्र होगा. एंसिलरी कमर्शियल बिल्डिंग में क्रूज टूरिस्टों के लिए आधुनिक शॉपिंग जोन होगा और इसे आम जनता के लिए भी सुलभ बनाया जाएगा.
अन्य सुविधाओं में ड्यूटी फ्री रिटेल लॉन्च, फूड कोर्ट आदि शामिल होंगे। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में 24 इमिग्रेशन काउंटर, 10 चेक इन काउंटर, वेटिंग लॉन्च, बैगेज आदि सुविधाएं होंगी। इस परियोजना से लगभग 3000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होने की आशा है। आंतरिक सड़क नेटवर्क और उपयोगिताओं के साथ भू निर्माण और सौंदर्यकरण विकसित किया जाएगा। फेरी टर्मिनल और रोपैक्स सुविधाएं शुरू में 400 वर्ग मीटर के लॉन्च के साथ प्रदान की जाएंगी और 2 वर्षों के भीतर 1500 वर्ग मीटर तक विस्तारित की जाएंगी। इस प्रस्तावित परियोजना द्वारा क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए मुरगांव पत्तन राज्य, राष्ट्र और विश्व के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। तर ह्या आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशी क्रूज टर्मिनलाच्या उदरगतीचेर एवी व्हिडिओ आणि ह्या फुडें मुरगांव बंदराचेर बायणा रेल्वे यार्डाची सुविधा वाडोवपाच्या ज्या कामाची सुरवात जाल्या त्या विशीं जाणून घेवया। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। और ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ हमने भरी है उड़ान। अब हम आपको ले चलते हैं मैंगलोर कर्नाटका, जहां नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के निर्माण प्रकल्प का लोकार्पण होने जा रहा है। मॉडर्नाइज मल्ल्या गेट, solid waste management facilities to treat the generated solid waste in the port, and launch of bilingual website of New Mangalore Port Authority. Along with the commissioning of these 3 projects, foundation stone is being laid for the construction of PQC road from main gate to Kudremukh junction and construction of truck terminal near custom house adjacent to NH 66. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से विनती करती हूं कि न्यू मैंगलोर पत्तन प्राधिकरण के इस प्रोजेक्ट का वर्चुअली लोकार्पण करें।
Thank you, sir. The first project commissioned is Modernize Malya Gate. Let's have a virtual walkthrough. Modernization of Malya Gate. New Mangalore Port Authority has 3 entry and exit gates for evacuation of the cargo. To decongest the increasing vehicle movement in the harbour area, modernization of the main gate from 2 lanes to 4 lanes was taken up and completed with the project cost of rupees 3.3 crores. The 4-lane gate facilitates exclusive movement of cargo trucks, trailers in 1 lane, pedestrians and LMV, 2-wheelers in another lane. The fully automated exit entry gates are controlled through RFID and facilitate congestion-free and better security control. The gate contains ground plus 2-floor buildings on north and south side wherein customs, CISF personnel, other concerned officers can be accommodated. 4-laning of the late US Malya Gate has further eased movement of traffic into the port and reduced dwelling time at the gate. The second project commissioned is Solid Waste Management Facilities, which will treat the solid waste generated in the port. Let's know more about the project. Solid waste management facility to treat solid waste generated in the port. New Mangalore Port Authority has taken one more step towards the sustainable environment management. New Mangalore Port is spread over 850 hectares of land, comprising of 572 quarters in the residential colony, covered with thick greenery, fruit-bearing trees, medicinal plants, park and gardens, due to which a lot of solid waste garbage is generated in this area. Earlier, all generated garbage were handed over to the Mangalore City Corporation. In view of reducing the effect of waste on the environment, health and so on, New Mangalore Port Authority decided to self-manage the garbage generated by converting it into high-quality manure through vermicompost technology under the guidance of expert consultant Dr. Harish Joshi. The total estimated cost of the project is rupees 50 lakhs. The vermicompost unit contains 11 vermibins, 1 slurry tank and 1 shredder machine is installed in a 300 square meters covered shed. The project commenced on 13 December 2021 and completed on 12th October 2022. The vermi technology is a method of converting garbage into organic manure using earthworms. The earthworm is a bioengineer which converts waste into useful products like vermicompost. From the generated garbage, NMPA would produce around 25 to 30 tons manure per year and use it for internal purpose in upkeep of the vegetation in the port premises. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी खुद की पहचान बनाई है। आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है। सबका साथ सबका विश्वास से शुरू हुई यह यात्रा सबका विश्वास हासिल कर अब आगे बढ़ी और सबके प्रयास के साथ भारत बुलंदियां छू रहा है। New Mangalore Port Authority has developed bilingual website which is user friendly and addresses all the requirements of the day-to-day businesses of the port operations, which will enable ease of doing business. Let's have a look. The bilingual website is developed by Center of Development of Imaging Technology as per the Government of India guidelines for government websites at a total project cost of 12.25 lakhs. The new website is user-friendly and addresses all the requirements of the day-to-day business operations of the port and its stakeholders. In order to enable ease of doing business operations, several features have been developed in the portal, such as a dedicated portal has been developed for pensioners of the port for making the pension retirement related information and services handling mechanism accessible online.
This enables the pensioners, family pensioners, to submit the details online for availing post-retirement benefits. Pensioners can generate pension pay slips, submit medical claims along with its necessary documents, life certificate, and can see Form 16 details online. Family member of the pensioner can apply for family pension by submitting the required documents through the portal. The port users can access the port operating system, geographic information system to know the vacant plots and apply online. It also enables the users to apply for RFID-based port entry passes. Stakeholders can see daily vessel position in the port. The customers and stevedores can register online for availing port services, thus creating a user-friendly online interface and enabling ease of doing business initiatives. प्रगति का प्रयास कभी थमने ना देना, यही तो यशस्विता का मंत्र है। इसीलिए पूर्ण किए हुए प्रकल्प के लोकार्पण के पश्चात नए प्रकल्प के लिए शिलान्यास किया गया, ताकि प्रगति की राह पर हमारी गति बढ़ती रहे, दौड़ती रहे। Let's have a virtual walkthrough of construction of PQC road from main gate to Kudremukh junction. Construction of PQC road from Malya Gate to KIOCL junction. Four-laning of the main gate of the port necessitated for better and wider bylane for movement of heavy trucks inside the port without clogging the National Highway 66 running adjacent. Therefore, it was decided to reconstruct the 700 meters pavement quality concrete road connecting between KIOCL junction and US Malya Gate at an estimated cost of rupees 3.75 crores. The work is scheduled to complete in February 2023. The concretized road would facilitate smooth and hassle-free container and other cargo traffic movement into the port without disturbing the traffic in the national highway. आणि शेवटाक कस्टम हाऊस लागी ट्रक टर्मिनल बांदचे खातीर भूमिपूजन आयज जाला। पळोवया हो प्रकल्प कसो आसतलो। Construction of truck parking terminal near Custom House. New Mangalore Authority decided to upgrade the existing feasible pavement truck parking terminal near NH66 with pavement quality concrete for an amount of rupees 3.71 crores. Truck terminal can accommodate about 200 heavy trucks. The work is awarded with commencement date on 1st October 2022 and the completion date as 31st October 2023. The benefit of this truck terminal would be to avoid the parking of vehicles on the roadside. Hygienic facilities, restrooms to truck drivers results in safe driving of trucks. Eliminate theft of batteries and tires, etc. Minor repairs of trucks can be carried out. Port is continuously developing infrastructures to facilitate easy movement of traffic in the port area. तरी हे आशिल्ले मुरगांव पत्तन प्राधिकरण आणि न्यू मँगलोर पोर्ट ऑथॉरिटीच्या महत्वाचे आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प। कार्यावळीत याफुडें मानाधिक मंत्री श्री श्रीपाद नाईक हांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें। नमस्कार। आजच्या या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमाक माझेर उपस्थित श्री सर्वानंदजी सोनवाल, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, Sri Movin Gudino,
Transport Minister Goa, Sri Vinay Tendulkar, Member of Parliament Rajya Sabha, Sri Nilesh Bab Kabral, PWD Minister, Sri Rohan Khote, Tourism Minister, Sri Raji Sarkar, MLA Vasco, Sri Sankalp Amonkar, MLA Murgaon, Dr. A.V. Ramanna ji, Chairman Chennai and Goa Port, Mr. Guru Prasad Rai ji, Deputy Chairman Murgaon Port, dignitaries of the dais, all the officers, workers of the port, central government and state government, and my dear brothers and sisters. Lokarpan and Shilanyas of 3 projects of Marbugao Port Authority worth rupees 137.45 crore and 5 projects of New Mangalore Port Authority worth rupees 11.29 crore is a significant step for Marbugao Port and New Mangalore Port towards realizing the goals outlined in Marine India Vision 2030. I am really glad to see both the ports making such a wonderful progress in MIB 2030. This document, launched in the March 2021 by Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, was prepared over a course of 2 years by collating the recommendation from more than 350 public and private stakeholders from ports and shipping sector. This document is a ready reference for understanding the vision of accelerated development of this sector through this decade through the 150 plus initiative outlined across the various aspects of the sector, including development of the state-of-art infrastructure, digitization, ease of doing business, and environmental sustainability, the 4 aspects which will be bolstered through this project. Commissioning of 3 floating jetties on River Mandavi National Waterway 68 and one River Shapora National Waterway 25 for rupees 9.6 crore will be reinforced inland waterways transportation of cargo and facilitate the tourist movement. It will lead to decongestion of the traffic on the road as well. Development of the international and domestic cruise terminal for rupees 101.72 crore will lead to direct and indirect employment generation for more than 3,000 people, including that the operation of taxis, baggage, clearance, restaurant, housekeeping, cottage industries, manufacturing, local handicraft, and other related activities. It will be boost the cruise tourism for both international and domestic tourism. Construction of up-ramp at railway yard Baina for rupees 26.13 crore will lead to decongestion of traffic plying through the city limit. Modernization of Malla Gate for rupees 3.22 crore and construction of PQC road from the Malla Gate to Kudrimukh Junction for rupees 3.76 crore will be facilitate smooth movement for cargo vehicle carrying the container and other cargo and reduce the turnaround time at a gate. Construction of truck terminal near Custom House adjacent to National Highway 66 for rupees 3.71 crore will reduce the congestion from the highway and service road and improve supply chain reliability for the providing the truck drivers with a safe place with hygienic facilities. Development of the bilingual website of the New Mangalore Port Authority for rupees 12.25 lakhs has further digitized the process in the spirit of ease of doing business and will improve users' experience for the port user as well as the pensioners. New Mangalore Port has added another feather to its green initiatives cap to construction of solid waste management facilities for rupees 48.69 lakhs. This is an important step towards becoming self-reliant for total waste recycling. On this occasion, I would like to thank Honorable Prime Minister for his sagacious vision and
motivation, I would like to thank Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways for inspiring us with his hand-on working style and constant guidance and support with the work in progress. I certainly believe that with all your participation and support, this decade is going to be a historical decade for transformation of India's port sector in India. With this word, I once again thank you, all of you. Thank you very much. Jai Hind. उपकारी सर. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी आपले विचार उक्तावचे. इनॉग्रेशन आणि फाउंडेशन स्टोन या सेरेमनी खातीर आमच्या मदीं उपस्थित आसात श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, आयुष मिनिस्टर, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर, भारत सरकार. त्याच बरोबर आमचे श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द पोर्ट एंड शिपिंग, स्टेट मिनिस्टर. आमच्या मदीं आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खवटे आणि हांगासले स्थानिक मार्मागोवाचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर, त्याचबरोबर कृष्णादाजी साळकर आणि मार्मागोवा ऑथॉरिटीचे चेअरपर्सन आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, उपस्थितांमध्ये आशिल्ले सगळे मानेस्त. आज खास करून हांव गोंय सरकारच्या वतीन आमचे मिनिस्टर सोनोवालजी हांचे खूब खूब स्वागत करता. ते खासा कार्यक्रमांक आज आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित रावले आणि तांच्यांनी मुद्दामून आज दोन कडे कार्यक्रम घडोवन हाडले. एक आमच्या कॅपिटल पणजी पोर्ट हांगासर पणजी पोर्ट तांच्यांनी फ्लोटिंग जेटी प्लस सोलार फेरी बोट अशे दोन प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन केले. पयलेच फावटी दोन फ्लोटिंग जेटी ज्यो शिपिंग मिनिस्ट्रीच्या वतीन गोंय सरकाराक तांच्यांनी दिल्यो आणि सोलार फेरी बोट ही गोंय सरकारची त्या प्रोजेक्टाचे उक्तावण आमी तांच्या हस्ते केले. त्या खातीर तांचे खूब खूब अभिनंदन. आज खरें म्हणल्यार मार्मागोवा तालुक्यांत ही सगळ्यात व्हडली उदरगत आसा म्हणपाक कांय हरकत ना. ज्या उदरगतीची आमी गेली कितलीशींच वर्सां वाट पळयता, फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा की पुराय मार्मागोवा तालुक्याच्या विकासा खातीर ज्या प्रोजेक्टाची इतके दीस आमी वाट पळयताले ते खरो दीस आयज आयिल्लो आसा. ह्या दिसाचे आमी पळयता की इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल्स, मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आणि हाचो प्रोजेक्ट लिंक फाउंडेशन लिंक सेरेमनी, आज ज्या प्रोजेक्टाचो फाउंडेशन आमी घातला त्या प्रोजेक्टाच्या हस्ते म्हाका दिसता पुराय मार्मागोवा तालुक्यात आतां श्रीपाद भाऊ सांगतालो आणि ताज्या पयलीं तुमकां पुराय प्रोजेक्ट तुमी जो सगळो पळयलो, आमी पळयता की ह्या प्रोजेक्टाच्या वतीन हांगासर येवपी क्रूज ज्यो आसा, आज जरी आमी म्हणटा 10 ते 12 क्रूज येता आसतल्यो जाल्यार फुडल्या प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत पुराय कंप्लीट ना म्हटले जाल्यार 50 क्रूज ज्यो इंटरनॅशनल क्रूज हांगा येवपाची शक्यता आसा. हो प्रोजेक्ट पुराय जाल्या उपरांत कमीत कमी 3000 लोकांक डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो आसा ह्या मार्मागोवा तालुक्यांतल्या लोकांक निश्चित रित्या केंद्र सरकार हे दिवपाक शकतले. आणि म्हाका दिसता ह्या ऑपॉर्च्युनिटीचो फायदो ह्या पुराय तालुक्यांतल्या लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर मेळपाक शकतलो हाची म्हाका खात्री आसा. खास करून ज्या पद्दतीत आयच्या ह्या कार्यक्रमाची तयारी ही आमचे स्थानिक आमदार बाब संकल्प आमोणकर आणि ताच्या सगळ्या लोकांनी केले, त्या बद्दल हांव संकल्प आमोणकर हाचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण पयलेच फावटी पोर्टात येदो व्हडलो कार्यक्रम जो घडोवन हाडलो मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आणि ताच्या खातीर येदी व्हडली तयारी ती तांच्यांनी केली, त्या खातीर तांचेय खूब खूब अभिनंदन. बट निश्चितच रित्या आमी आयज पर्यंत पळयताले की मायनिंग चालू आसतना खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर मायनिंग एक्टिविटी हांगासर एक्सपोर्ट आयर्न ओर जातालो. तेद्या वेळार आमी म्हणटा की गोंयची मोठी इकॉनॉमी जी आशिल्ली ह्या मायनिंग मार्मागोवा पोर्टाचेर डिपेंड आशिल्ली. बट 2012च्या उपरांत मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ह्या पोर्टाचेर तितक्यो एक्टिविटीज चलना. निश्चित म्हणजे हांव उलयता आसतना पणजे किंवा पणजेच्यान येता आसतना हांवें आमच्या मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केला, ह्या पोर्टाचेर जर एक्टिविटी आसतली जाल्यार क्रूज टर्मिनल किंवा इतर एक्टिविटी आमकां स्टार्ट करपाक जाय, जेणे करून हांगासली इकॉनॉमी सर्वायव जातली, आमच्या स्थानिक लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटले. ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या सहकार्यात इतर हांगासल्यान गजाली ज्यो एक्सपोर्ट करपाक जाय त्यो गजाली निश्चित रित्या गोंय सरकारच्या वतीन
तांकां आमी सांगलेले आसा आणि म्हाका दिसता की येता त्या काळात बरेचशे लोक पोर्ट म्हटले काय कोल हाच्याच कडेन पळयता. आमकां फक्त कोल हांगासर इम्पोर्ट करपाचो ना, कोलाच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा इवन दो द मॉलेसीस आणि नवीन प्रपोजल तेंच्या कडेन हांगासल्यान मॉलेसीस एक्सपोर्ट करपा खातीर आयला. इवन दो फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी हांगासल्यान गंव एक्सपोर्ट केल्ले आसा. अश्यो विविध गजाली ज्यो हांगासल्यान एक्सपोर्ट जावपाक शकता. इवन दो आमी गोंयांत फार्मास्युटिकल्स कंपनीची वखदां सगळी नवशिवा पोर्टा वयल्यान जी एक्सपोर्ट जाता ती हांगासल्यान एक्सपोर्ट जावपाक शकता. मार्मागोवा ऑथॉरिटी चेअरमॅन हांच्या कडेन विविध प्रकल्प जे आसा ह्या विशयाचेर डिस्कस केला. अलॉंग विथ द क्रूज टर्मिनल आमी मार्मागोवा पोर्टाचो गोंय सरकार खूब बऱ्या पद्दतीन कसो यूज करपाक शकतले फॉर द एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट हाचो उपयोग आमी गोंय सरकारात तांच्या कडेन व्यवस्थीत रित्या प्लॅन हो दिला. म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी ब्लू इकॉनॉमीचो उपयोग गोंय सरकाराक किंवा कोस्टल स्टेट्स हो करपाक शकता हाचो विचार निश्चित रित्या केला. आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना ब्लू इकॉनॉमीचेर उलयता त्या ब्लू इकॉनॉमीचेर उलयता आसतना आमी एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट हाच्या माध्यमांतल्यान आमी तेजो फायदो करून घेवपाक जाय आणि ताजोय प्लॅन हो निश्चित रित्या रेडी जाल्या. त्या खातीर आयज ह्या कामाची सुरवात जाल्या आणि ह्या कामाची सुरवात करता आसतना श्री सोनोवालजी मुद्दामून हांगासर आयले. तांच्यांनी गोंयांतल्या आमच्या दोनूय प्रोजेक्टांचो फाउंडेशन स्टोन हांगासर लायलो आणि खास करून मैं मैंगलोर से जो लोग देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. आपके लिए भी सोनोवाल साहब ने यहाँ से जो 2 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लगाया है इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन. कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के लोगों के भी साहब यहाँ पे आए और आपके यहाँ का भी फाउंडेशन स्टोन यहीं से लगाया. इसलिए आपका और मैंगलोर पोर्ट का भी सभी अथॉरिटी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ. निश्चितच म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. येता त्या फुडल्या 4 वर्सात हांगासले पुराय चित्र जे आसा हे पुराय चित्र बदलतले. म्हणून हांव म्हणटा की गोंयांत जेका काम करपाची इच्छा आसा तो एकटोय बेकार उरपाक शकना. एके वाटेंतल्यान टुरिजम इंडस्ट्री आसतली, दुसरे वाटेंतल्यान क्रूज इंडस्ट्री आसतली. अशा पद्दतीत आमी ज्या पद्दतीचो म्हणजे एक प्लॅन जो रेडी केला त्या प्लॅनानुसार प्रत्येक काम करतल्या खातीर काम दिवपाची ताकद सरकारा कडेन आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की आमी स्किल इम्प्रुवमेंट करता आसतना स्किल डेव्हलपमेंट करता आसतना प्रत्येकाक वेगवेगळ्या कामाची स्किल डेव्हलपमेंट ह्या वेगवेगळ्या तालुक्यात ITI आणि स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट हाच्या बरोबर सुरवात केल्या. आणि निश्चित मार्मागोवा तालुका थोडोसो तरी फाटल्या आमी खूब पळयता की बऱ्याच जाणांक की आमच्या वास्को एअरपोर्टाची चिंता आसा. पण हांव ह्या सुवातीचेर सांगपाक सोदता की वास्को एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्धा जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना. दाबोली एअरपोर्ट कदापि आमी बंद करूंक दिवपाचे ना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदून कंटिन्युअसली हाजेर चौकशी करीत आसा. फुडल्या आठवड्यात आमी दोनूय एअरपोर्टाचेर प्लॅनिंग कशा पद्दतीत म्हणजे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले. इंटरनॅशनल फ्लायट्स जर सगळ्यो थंय गेल्यो आसात जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स हांगासर कश्यो लँड जातल्यो हाजोय विचार सरकारान केला. त्या खातीर मार्मागोवा ज्या तालुक्यात अवघ्या 4 किलोमिटराचेर डिस्टन्साचेर पोर्ट आसा, ज्या एअरपोर्ट आसा आणि ही पुराय गतिशक्ती प्लॅनाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता जेका वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर द रेल पोर्ट आणि एअरपोर्ट जर सगळ्यात बरी खंय आसा जाल्यार ती आमच्या मार्मागोवा तालुक्यात आसा. हो मोठो आमकां अभिमान आसा. आणि तेकाच लागून सांगता गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म हो वापरल्या उपरांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे विजन आसा पुराय देशाचो डेव्हलपमेंट करता आसतना गतिशक्ती या प्लॅटफॉर्माचेर मार्मागोवा तालुका 1 नंबरात फुडें आसतलो. आणि म्हणून त्याचो पुरेपूर आणि योग्य उपयोग करता आसतना या पोर्ट एअरपोर्ट आणि रेल या तिनांचो उपयोग करून आमी हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट एक्टिविटी हांगा करपाक शकता. आणि हे सगळे करता आसतना पुराय मार्मागोवा तालुक्यातल्या लोकांक विश्वासात घेवनूच हांगासलो विकास जातलो हे हांव सांगता. आमचो हांगासलो स्थानिक मंत्री बाब माविन गुदिनो, आमदार बाब संकल्प दाजी हांकां सगळ्यांक विश्वास घेवन पुराय हांगासल्या लोकां खातीर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हांगा जावपाक जाय तो करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसतले. आणि आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि पोर्ट मिनिस्टर श्री सोनोवालजी आणि तांच्याच बरोबर आमचे स्थानिक श्रीपाद भाऊ आमचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हे ह्या सुवाळ्याचेर हांगासर उपस्थित आसा. आमकां सगळ्या लोकांची चिंता आसा. त्या खातीर कोणीच खंयच्याच बाबतीत
नाका जाल्ल्यो गजाली एअरपोर्ट किंवा हेच्या बद्दल करून लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाची गरज ना. पुराय राज्याच्या विकासा खातीर आणि मार्मागोवा तालुक्याच्या विकासा खातीर सरकार कटिबद्ध आसतलें इतकेंच सांगता. आणि आयच्या दिसाच्यो आणि परत एकदा म्हणजे हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपा खातीर 2024च्या निवडणुकेच्या पयलीं परत एकदा मैं सोनोवाल साहब को यहाँ बोलता हूं कि हम 2024 के इलेक्शन से पहले आपको फिर से एमपीटी की तरफ से इनवाइट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आप यहाँ आएंगे. यही कह के मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं और मेरे 2 शब्द पूरा करता हूं. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर. कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन है कि वे हमें मार्गदर्शन करें. नमस्ते. मैं मुगासो यूकर, ये सही है ना? मैं हमारे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोवा प्रदेश की प्रमोद सावंत जी से इन शब्दों का ज्ञान मैंने हासिल किया. तो आज हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोवा प्रदेश की डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारी भारत सरकार की परम आदरणीय मंत्री श्रीपद नायक जी, गोवा प्रदेश की माननीय मंत्री नीलेश काबराल जी और माननीय मंत्री मोबिन गुडिन हो जी, माननीय मंत्री रोहन ए खोंटे जी, माननीय राज्यसभा की सांसद श्री विनय डी तेंदुलकर जी, माननीय विधायक कृष्णा भी सालकार जी, माननीय विधायक संकल्प अमन कार जी, माननीय न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की और मरमागांव पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटा रमन जी, हमारे डेप्यूटी चेयरमैन जीपी राय जी, सारे अधिकारीगण, दोनों पोर्ट अथॉरिटी की परम आदरणीय अतिथिगण, भाइयों बहनों और हमारे प्रिय पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले तो मैं गोवा की जनता को हृदय से
प्रणाम देता हूं। आप लोगों ने आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें हौसला दिया, हमें हिम्मत दिया और सभा को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने पालन किया है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये बात रखी है कि आज के कार्यक्रम लोकार्पण और शिलान्यास अलग अलग कार्यक्रम के लिए ये लोकार्पण किया गया है और साथ में शिलान्यास की भी कार्यक्रम रखा गया है। दोनों पोर्ट के लिए मार्मोगांव पोर्ट अथॉरिटी और साथ में न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, तो मुझे लगता है कि दोनों पोर्ट की शक्ति बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम अगले दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे, क्योंकि हमारे सबके लक्ष्य है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये निर्देश जारी की है कि देश के अंदर हमारे जितना भी पोर्ट है, इस पोर्ट को आधुनिक हमारे विज्ञान और प्रयुक्ति के द्वारा उसकी विकास के लिए विशेष कदम उठाया जाए। तो इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सागरमाला के जरिए ये लक्ष्य तय किए गए हैं कि हमारे हर पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाएगा और साथ साथ में पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी खड़ा किया जाएगा और साथ साथ में पोर्ट लेट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट भी किया जाएगा और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा और कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सागरमाला प्रोग्राम की अधीन में कुल मिला के 802 प्रोजेक्ट चिन्हित किया गया था। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट का काम अभी कंप्लीट होने जा रहा है और कंप्लीट हो गया है 200 से अधिक प्रोजेक्ट का, जिसके वजह से आज हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी देश के अंदर दिनों दिन बढ़ने लगा है और मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन के वजह से आज हमारे पोर्ट अथॉरिटी ने अपनी काबिलियत को दिखाने में सफलता प्राप्त की है और आज बीइंग ए फैसिलिटी प्रोवाइडर हमारी तरफ से हम भी दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट का साथ हेल्दी कंपटीशन में उतरने के लिए हमारा भी व्यवस्था हम लोगों ने उसी हिसाब से मजबूत की है। तो मुझे लगता है कि आज गोवा विशेष रूप से इस प्रदेश का अलग सा पहचान है। देश के अंदर सबका मानना है, मुझे भी मानना है, मैं भी मानता हूं, अगर देश के अंदर सबसे खूबसूरत जगह कहीं है वो गोवा है। गोवा प्रदेश भी खूबसूरत है, जनता भी खूबसूरत है, बड़े मेहनती है, बड़े सरल है, हाईली कल्चर्ड एंड एजुकेटेड है। तो इसलिए ये समाज मुझे लगता है कि भगवान का दिया हुआ वरदान है और ये समाज कभी पीछे देखेगा नहीं। ये समाज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में अगले दिनों में गोवा के प्रदेश की जनता बड़े भूमिका निश्चित रूप से निभाएंगे, ये मेरा मानना है। इसलिए हमारे देश के आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में गोवा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के सिलसिले में वो भी कदम उठाएंगे और हम अपने देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले दिनों में एक सबसे मजबूत राष्ट्र के हिसाब से हम अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज देश जिस हिसाब से विकास की गति को तेज गति देने में सबने सहयोग किया है, शायद आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख कारगिल तक हर प्रदेश की जनता आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
आह्वान को स्वीकार करते हुए श्रद्धापूर्वक मान्यता देते हुए सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनकी सबसे बड़े मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन मंत्रों को साकार करने में सब लोगों ने निष्ठापूर्वक अब मेहनत करने लगे हैं। और आधुनिक जो माहौल आज देश के अंदर खड़ा हुए है, जो परिवर्तन लोगों को मिला है, जिसके वजह से आज हर वर्गों को अपने शक्ति दिखाने का एक मौका मिला है और इज्जत से जीने का बड़े एक माहौल मिले है। ये परिवर्तन लाने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर जो मेहनत की है, निरंतर निष्ठापूर्वक ईमानदारी से, और जिसके वजह से आज उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है और देश के 130 करोड़ जनता को दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो शक्ति, जो हिम्मत, जो साहस दी है, इसके लिए आज हम मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने में हम सबको गर्व महसूस होते हैं, गर्व महसूस होते हैं, गर्व महसूस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज गोवा ये प्रदेश बड़े शांति का भूमि है और इस प्रदेश ने कई महान कलाकारों को भी जन्म दिया है। लता मंगेशकर हमारे सबके दिल में बसे हुए हैं। लता जी ने सिर्फ भारत को ही नहीं, दुनिया के मानव समाज को उन्होंने अपने गीतों की द्वारा इंसानियत की भावना शक्ति जगाने में उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। तो इसके लिए आज भी लता जी को बड़े श्रद्धापूर्वक लोग याद करते हैं। हर इंसान का दिल में बसे हुए हैं लता जी। ऐसा एक बड़े महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में अपने जो भी कार्यक्रम है प्रदेश की, भारत सरकार की जो भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल रूप देने में आप सब निश्चित रूप से परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद चौहान जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आप निष्ठापूर्वक काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब सहयोग करें, क्योंकि मैंने ये जो डॉक्टर प्रमोद चौहान जी का जो व्यक्तित्व है, बड़े सरल व्यक्तित्व है, बड़े निष्ठापूर्वक मेहनत करते हैं, जनता की एक सेवक के रूप में उन्होंने आज जिस हिसाब से अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाए है, तो मेरा ये मानना है ये गोवा अगले कम दिनों के अंदर देश के अंदर बड़े शक्तिशाली प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बना पाएगा। मैं असम से हूं। असम की जनता के बीच जब भी बातचीत होते हैं, सब बोलते हैं। मैं कल भी किसी को मैंने मेरे शुभचिंतक का साथ टेलीफोन में बात किया, मुझे उन्होंने सवाल किया कहां जा रहे हो, मैं बोला गोवा जा। अरे बाप रे, इतना खूबसूरत जगह में जा रहे हैं आप, हमें भी ले जाइए ना। सो लोगों का दिल में जो मतलब गोवा के लिए जो दिल में जो जगह है, ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। सब बड़े बड़े आदर से, बड़े स्नेह से गोवा का नाम वो पुकारती है। इसलिए गोवा भूमि जैसे मुझे इस भाषण में मैंने सुना, हमारे बड़े जो भी ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस भूमि का शक्ति जिस हिसाब से मजबूत की थी, तो आज इस भूमि में हम लोगों को देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। तो और हम लोग एक बात पर सब गौरवशाली है कि मोदी जी जैसे महान नेता का नेतृत्व में आज देश सेवा करने के लिए आप सबको, हम सबको मौका मिला है। तो इसलिए हम पीछे नहीं रहेंगे, हमको आगे जाना है, देश को आत्मनिर्भर बनानी है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत बनानी है। 130 करोड़ जनता
जब एक साथ मिलकर मेहनत करे तो ये शक्ति दुनिया का महाशक्ति के रूप में उभर के आएंगे, ये निश्चित है। तो ये काम मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी कार्यक्रम हुए हैं, इस कार्यक्रम के जरिए निश्चित रूप से गोवा की जो भी पोर्ट है, इस पोर्ट की शक्ति मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है सागरमाला प्रोग्राम के जरिए अगले दिनों में और भी हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से गोवा प्रदेश सरकार को पूरी से पूरी मदद किया जाएगा। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आज सभा शुरुआत में हमारे कलाकारों ने जो गीत उन्होंने पेश की है, तो आप सभी कलाकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही कला के जरिए, संस्कृति के जरिए देश की एकता और हमारी इंसानियत का भावना शक्ति आप जगाते रहिए, क्योंकि कला में वो शक्ति है, संस्कृति की धारा में वो शक्ति है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कैसे हम अपने एक बड़े सद्भावना और इंसानियत का भावना शक्ति हम जगा सकते हैं, वो शक्ति भगवान ने कला में दी रखी है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने अलग अलग भाषाओं में जैसे गीत पेश की है, असमिया हो, कंकन हो, हिंदी हो, तो इससे साफ जाहिर है जो मोदी जी का आह्वान है, मोदी जी जो चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हम एक भारतीय है, हम श्रेष्ठ है। तो उसी संदेश हमको एक जगह से दूसरी जगह तक हर पल देना होगा और लोगों का बीच में सद्भावनाओं से दोस्ती बढ़ाना होगा, और ऐसे ही हम भारत का शक्ति बढ़ाते जाएंगे। इसी शब्दों का साथ, इसी उम्मीद का साथ मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से अब तक उन्होंने हमें साथ दिया। दोनों कार्यक्रम, आयुष सेक्टर की और पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, क्योंकि गोवा में जो पानी है, मैं तो मानता हूं वाटर इज द वेल्थ एंड एनर्जी, वाटर इज द विजडम। सो ये पानी में जो शक्ति है, इस शक्ति को हमें सही रणनीति के द्वारा, परिकल्पना के द्वारा हमें इस शक्ति को सही पहचानना होगा, और उसी हिसाब से we'll have to explore in the best possible way for our good, for our growth of economy as well as for our growth of ecology and environment. With these few words, I conclude. Thank you. Bharat Mata ki Jai Hind. धन्यवाद सर. We are grateful for your kind and encouraging words. आयचो दीस आनी हो सुवाळो आमच्या खातीर खूप व्हडलो आनी महत्वाचो. मुरगांव पत्तन प्राधिकरण आनी नवमंगलूर पत्तन प्राधिकरणाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पा खातीर शिलान्यास आनी लोकार्पण जाला, त्या खातीर हो सुवाळो महत्वाचो आसाच, पूण त्याच वांगडा आयच्या मुखेल सोयरे तशेंच मानादीक सोयऱ्यांच्या उपस्थितीक लागून हो सुवाळो अधिक महत्वाचो जाला. तुमचो वेळ आमच्या खातीर दिल्ले खातीर आमी उपकारी आसात. आमच्या सोयऱ्यां प्रती आमचो मोग आनी सन्मान उक्तावपाक आमी मानेस्तांक यादिस्तिका भेटयतात. मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटरमण अक्कराजू जी से निवेदन है कि कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को स्मरण चिन्ह प्रदान करें. गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय आमी यादिस्तीक भेटयतात. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नाईक हांचे प्रती आमी कृतज्ञता उक्तावपाक तांकां यादिस्तीक भेटयतात. मानादीक मंत्री श्री मॉविन गुदिनो हांकां यादिस्तीक भेटयतात.
मंत्री श्री रोहन खवटे. मंत्री श्री निलेश काब्राल हांकां ह्या दिसतीक भेटयतात. राज्यसभा खासदार श्री विनय तेंडुलकर. वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा साळकार. मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकार. धन्यवाद. I request Deputy Chairperson MPA Shri G.P. Rai to propose vote of thanks. A very good evening to all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by the heart. On behalf of Marmagaon Port fraternity, I feel honored and privileged to express my gratitude and on this special occasion. I sincerely thank Honorable Union Minister Ayush, Port, Shipping and Waterways, Government of India, Shri Sarvanand Sonomal ji for gracing this and addressing this auspicious occasion. He is an inspiration and guiding force for port sector. His vision and policy initiatives gives boost for major ports. Under his leadership, port infrastructure, especially related to cruise, is getting more emphasis and financial support to implement the desired scheme. I would like to offer my special thanks to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, for his distinguished presence and addressing the August gathering. He has always supported port and shown his concern and intervened to sort out the issues related to MPA. And I am confident that MPA will receive his continued support in future. Honorable Minister of State, PSW and Tourism, Shri Shripad Nayak ji, commands special thanks for his valuable guidance and encouragement. I feel proud to say that his doors are always open for port officials when any issue is related to be addressed. I would like to express my sincere gratitude for distinguished presence of Honorable MP Rajya Sabha, Shri Vinay Tendulkar ji, Honorable Minister of Transport, Industry and Panchayat Protocol, Shri Govind Kudunur ji, Honorable Minister of Tourism, IT, Printing Stationery, Shri Rohan Konte ji, Honorable Minister for Legislative Affairs, Environmental and PWD, Nilesh Gabral ji, Honorable MLA, Marmagaon constituency, Sankalp Amolkar ji, Honorable MLA Vasco constituency, Shri Krishna Dalji, Salkar ji, for presence. Your presence added special color and fragrance befitting to this auspicious occasion. Thank you very much. Further, I wish to thank our chairman, Dr. A.V. Ramana, for his unstinted support and guidance all through. I thank all distinguished invitees present here for accepting our invitation. I thank event management team and cultural troops for making today's event resounding success. I owe special gratitude to my entire team of Marmagaon Port and all good hearts behind the screen who have worked hard to ensure that this become a memorable occasion. We would like to put on record the wholehearted support of Minister of Tourism and Minister of Ports, Shipping and Waterways for funding this project, to whom we remain ever grateful. I would like also express my sincere gratitude to print, electronic and social media for their presence in large number and covering this event and giving wide publicity. Before I end my vote of thanks, I would like to express my deep appreciation for overwhelming response from the people of Marmagaon and Vasco. Jai Hind.
थँक्यू सर. आणि कार्यावळीचो समारोप राष्ट्रगानान करतात. सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.